We have already gone through the workshop 1 where we learned about the basics. तो आज हमारा इस वर्कशॉप में ये सब ऑब्जेक्टिव्स है जो सीखना चाहेंगे हम लोग. तो पहले तो हम प्रीवियस वर्कशॉप का एक क्विक रिकैप लेंगे. देन विल लर्न अबाउट द बिहेवियरल मॉडलिंग. बिहेवियरल मॉडलिंग में आता है स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर्स, जहाँ पे ऑलवेज और इनिशियल कीवर्ड्स हैं या स्टेटमेंट्स हैं. इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में. देन देयर आर ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स. डिले का कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे हम. देन देयर विल बी इवेंट बेस्ड टाइमिंग कंट्रोल मैकेनिज्म के बारे में देखेंगे क्या है. और उसके बाद से ये सब तो सी प्रोग्राम जैसा है. इफ एल्स, स्विच केस, लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स में हम लोग का फॉर लूप, व्हाइल लूप और कुछ लूप कंस्ट्रक्ट्स है वो सब. और उसके बाद से टाइम रहा तो हम लोग एग्जांपल्स भी देखेंगे कुछ. ओके, तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द क्विक रिकैप ऑफ द लास्ट वर्कशॉप. सो देयर आर 3 ways ऑफ मॉडलिंग अ डिजिटल सर्किट इन वेरिलॉग. ये हम लोग देखे थे लास्ट वर्कशॉप में. तो फर्स्ट इज गेट लेवल मॉडलिंग, सेकंड इज डेटा फ्लो मॉडलिंग एंड थर्ड इज बिहेवियरल मॉडलिंग. बिहेवियरल मॉडलिंग हम लोग को भी देखना है. ये फर्स्ट दो जो है वो हम लास्ट वर्कशॉप देखे थे. तो गेट लेवल मॉडलिंग द लोएस्ट लेवल मॉडलिंग स्कीम है जो हम यूज करते हैं, जहाँ पे हम गेट्स को इंडिविजुअली स्पेसिफाई करते हैं और सारे कनेक्शंस को स्पेसिफाई करते हैं एंड वी गेट द आउटपुट. इन डेटा फ्लो मॉडलिंग हम लोग बूलियन एक्सप्रेशंस को इम्प्लीमेंट करते हैं और डायरेक्ट सर्किट को इम्प्लीमेंट करने के बजाय पे जस्ट वी राइट द बूलियन एक्सप्रेशन एंड द वेरिलॉग सॉफ्टवेयर डिजाइंस द सर्किट. और कुछ स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का हम देखे थे, जैसे फुल एडर हो गया, मक्स का हम लोग देखे थे कैसे मॉडलिंग करते हैं, और एक डिकोडर का एग्जांपल भी हम लोग देखे थे. So you can always check that in the last workshops recorded lectures. तो आज का टॉपिक यहाँ से शुरू होता है. What is behavioral modeling? तो the behavioral modeling जो है वो more or less like हाई लेवल लैंग्वेज ही है, जैसे प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं सी या सी प्लस प्लस में. तो इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन दैट इज प्रोवाइडेड बाय वेरिलॉग. तो इन बिहेवियरल मॉडलिंग हम कोड्स यूज करते हैं, जैसे कि सी और सी प्लस प्लस में करते थे. तुमको कोई एक प्रॉब्लम दिया है, उसको सॉल्व करना है, देन यू राइट अ कोड. इन दैट कोड यू कैन यूज conditional statements, you can use looping constructs, and your only purpose is to solve the problem rather than thinking about what is the implementation behind that problem. Okay, तो इसलिए behavioral modeling को highest level of abstraction बोलते हैं. It makes our job much easier to like we can implement any circuit. कोई भी problem solve कर सकते हैं without worrying about the implementation part. Now Verilog का जो compiler है that has a strong computing capability. तो हम कुछ भी जो C या C++ के फॉर्म में लिख रहे हैं, जैसे if you're writing a if else statement or when you are writing looping constructs, then वो construct का कोई सॉफ्टवेयर मतलब सिस्टम के लिए कोई उसका मतलब नहीं है ना. इट द हाई लेवल लैंग्वेज इज जस्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर राइटिंग. इट इज बेसिकली सम इंग्लिश वर्ड्स एंड वी डिफाइन द पर्टिकुलर टास्क दैट द प्रोग्राम विल परफॉर्म. तो जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है, इट टेक्स द कोड एंड it converts the code into gate level model, and then it uses that code to implement the circuit that we are wanting. क्योंकि end of the day our chip should contain the basic gates and or not gates से सब बनेगा. So it is the part of job of the compiler to convert our high level code into the low level form and then implement the circuit. ठीक है. अच्छा, और बिहेवियरल मॉडलिंग जो होता है जनरली हम देखेंगे सिक्वेंशियल सर्किट्स के लिए यूज होता है. कॉम्बिनेशनल के लिए हम लोग गेट लेवल या फिर डेटा फ्लो मॉडलिंग यूज कर सकते हैं. नाउ वेरिलॉग में है कि इट डज नॉट वांट यू टू यूज जस्ट अ सिंगल काइंड ऑफ मॉडलिंग. तो एक सिंगल प्रोग्राम में ही यू कैन यूज गेट लेवल मॉडलिंग, यू कैन यूज डेटा फ्लो मॉडलिंग एंड यू कैन यूज बिहेवियरल मॉडलिंग ऑल टुगेदर. तो बिहेवियरल मॉडलिंग में देयर आर टू इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर्स. तो दे आर ऑलवेज एंड इनिशियल. ये दो कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. तो क्या होता है कि हम लोग लास्ट वर्कशॉप में जब देखे, व्हेन वी राइट एनी प्रोग्राम, so we create a module and we directly go on writing our program, implementing at gate level or the data flow modeling level. But if you want to use the concept of procedural
the concept of behavioral modeling, then you will have to use this always and initial statements. क्योंकि कुछ भी जो हम behavioral modeling use करते हैं, all the statements should come within this always or initial block. We'll learn about these two blocks in details. So these are the most basic statements, and all the behavioral statements can appear only inside these statements. Okay, now हम लोग का यहाँ पे concept आता है about the concurrent programming. Now, I think most of you have at least tried or written at least one program in C. So you must be knowing that in C or any other programming language, our execution is sequential. So sequential execution means that अगर ये जो in sequential programming, it means that when you have written this code, the first line will be executed, उसके बाद से अगला line execute होगा, then next line and so on till एक return statement आ जाए, तो हमारा main जो function है उससे बाहर आ जाएगा and program is terminated. But in Verilog, it is slightly different. Verilog में क्या होता है कि जो भी ये इनिशियल ब्लॉक्स है, जैसे यहाँ देख सकते हो एक इनिशियल ब्लॉक ये है, एक इनिशियल ब्लॉक इसमें आता है, एक ये इनिशियल ब्लॉक है, एक ये इनिशियल ब्लॉक है. So we have 4 initial blocks here. So in Verilog, all these 4 initial blocks start executing at the same time. So this is the concept of concurrent programming, that all the blocks start executing at the same time at t equal to 0. So as soon as you run the program, all these initial blocks will start independently, and उसका से जैसा इनके बीच जैसा इसमें statements है उसके अनुसार वो run करेंगे, and then each of this initial block will terminate. So we'll learn about it also. So now initial statement का बात करते हैं. So all statements inside initial statements को हम लोग initial block बोलते हैं. जैसे कि इसमें हम लोग देख रहे हैं, जैसे ये initial हुआ, तो ये पूरा जो एक initial के अंदर लिखा हुआ है, ये पूरा जो होता है that is called initial block. So initial block can have single statement और बहुत सारा statements भी हो सकता है. So if you have more than one statement, so for that we write this begin and end. तो begin and end जो होता है वो C का जैसा, ये brackets जो होते हैं curly braces उनके जैसा होता है. तो we use begin and end to club together बहुत सारा जो हमारे पास statements हो उनको एक साथ club करने के लिए काम आता है. Now this is important. All initial blocks start executing at time 0 and execute only once. Means जितना initial blocks है वो सब t equal to 0 पे start होगा and एक बार execute होने के बाद से वो terminate हो जाएगा. So there is no looping construct in initial blocks. It only executes once and then it is terminated. And each block finishes execution independently. इसके बारे में ये इसका क्या मतलब हम देखते हैं अभी. तो okay, इसमें हम समझते हैं कि initial block का मतलब क्या होगा. Okay, so when you run a program, suppose this is your program. ये पूरा full program तो नहीं है, एक मॉड्यूल है, एक पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है. तो अगर मानो ये मॉड्यूल रन हो रहा है, then this is our definition. हम लोग register types x, y, a, b, n. We have defined 5 register type variables. Now all these initial statements, ये initial statement हो गया, ये initial statement, ये initial and ये initial, all these 4 initial statements start executing at t equal to 0. टाइम जैसे 0 होगा ये सब स्टार्ट हो जाएगा. Now at t equal to 0, now we have to individually check कि हर जो initial block है वो कितना टाइम तक रन हो रहा है. So at t equal to 0 we start this initial block. यहाँ पे कुछ टाइमिंग का ऐसा डिले ऐसे कुछ नहीं दिया हुआ है हैश करके, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे. बट फॉर द टाइम बिंग ये इसका मतलब होता है कि वी वांट द एग्जीक्यूशन टू वेट फॉर सम टाइम, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करें. तो यहाँ पे वी डोंट हैव एनी सच डिले ऑपरेशंस. तो t equal to 0 पे ये इनिशियल में एंटर हुआ कंट्रोल, and at t equal to 0 this statement is executed. So this is execution at t equal to 0, and t equal to 0 पे ही ये इनिशियल ब्लॉक टर्मिनेट हो गया because it has no other statement. अब ये इनिशियल ब्लॉक started at t equal to 0. The control went to this statement and it encounters this hash 5. Hash 5 means it is asking the control to wait for 5 time units before executing this statement. तो अब हमारा 0 पे यहाँ पहुंच चुका है. So we'll wait for 5 time units. At t equal to 5,
this statement will be executed. So this is executed at t equal to 5. Okay. Now t equal to 5 पे execute हो गया. Then again statement moves to this part, and again it encounters hash 25, which means that from the present time इसको और 25 time units तक wait करना है. So it has to wait for 25 time units. So we are already at t equal to 5. So it will wait for 25, and so this block will be executed at t equal to 5 plus 25, that is t equal to 30. And t equal to 30 के बाद से end हो जा रहा है. So this initial block starts at 0 and it terminates at t equal to 30. Similarly, you can see here it starts at 0, then after 10, this will be executed. So this statement will be at time 10. Then again it will wait for 25, and this statement will be at time 25 plus 10, that is 35. And this initial, we always define this last initial as some delay and then finish. So finish हम लोग last workshop में पढ़े थे. This is used to terminate the entire program. तो क्या देखो t equal to 0 पे it has started and we are performing all our activities here. And हम लोग देख रहे हैं कि our activity last time is 35. 35 टाइम के बाद अगर हम लोग प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दें, देन ऑल्सो विल गेट द डिजायर्ड आउटपुट, बिकॉज 35 के बाद कुछ कंप्यूटेशन नहीं हो रहा है. सो बट फॉर सेफ्टी हम लोग यहाँ पे 50 का डिले दिए हैं. तो एट t इक्वल टू 0 दिस इनिशियल ब्लॉक स्टार्ट्स, एंड एट t इक्वल टू 50 यूनिट्स दिस फिनिश स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड एंड दिस एंटायर प्रोग्राम टर्मिनेट्स. इसका मतलब है कि फ्रॉम द टाइम ऑफ स्टार्टिंग विल नीड 50 टाइम यूनिट्स टू कंप्लीटली रन दिस प्रोग्राम. तो ये होता है हम लोग का इनिशियल ब्लॉक का या कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग का एग्जांपल कि इनिशियल ब्लॉक्स में कैसे रन हो रहा है. सो इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड इज कि ऑल द इनिशियल ब्लॉक्स स्टार्ट एट द सेम टाइम t इक्वल टू 0, और हर इनिशियल ब्लॉक अपने से इंडिपेंडेंटली रन करता है, which means this initial block has nothing to do with the next initial block, and each initial block terminates independently. जिसमें जैसा स्टेटमेंट्स होगा उस टाइम पे वो टर्मिनेट करेगा, and in the last we write this dollar finish the system task to terminate the entire program. Now the second construct, the procedure statement is always. तो always भी initial जैसे ही follow करता है, that it starts at t equal to 0, but इसमें जो ट्रिक है that always जो है वो execute continuously execute करते रहता है. It's like a always true looping construct. जैसे while loop में if you are writing always true condition, so it goes on executing till the program is terminated. उसका हमारा डिजिटल सर्किट में बहुत बार काम आता है. जनरली वी यूज इट टू प्रोवाइड क्लॉक्स, क्योंकि क्लॉक क्या होता है कि एज लॉन्ग एज आवर प्रोग्राम रन्स वी नीड अ क्लॉक टू पावर और टू सिमुलेट दिस फ्लिप फ्लॉप्स दैट विल बी यूजिंग. या बहुत सारी चीज में हम लोग का क्लॉक से ही सब कुछ कंट्रोल होता है. सो वी यूज ऑलवेज टू इनिशियलाइज द क्लॉक एंड टू रन द क्लॉक एक्चुअली. तो ये मॉड्यूल देखो. सो वी हैव अ मॉड्यूल नेम क्लॉक जेन. वी आर डिफाइनिंग रजिस्टर टाइप वेरिएबल क्लॉक, and see we are initializing an initial block. So first you identify this is an initial block, this is always block, and this is initial block. So we have 3 blocks. So all these 3 blocks will start at t equal to 0. t equal to 0 पे instantly clock को हम लोग binary value 0 assign कर दिए. So our clock has become 0. Now t equal to 0 always also executes, and यहाँ पे आके यहाँ पे encounter होगा hash 10, which means that we are asking the control to wait for 10 time units. So t equal to 10 पे we'll run this statement. So at t equal to 10, see what happens. Please pardon my handwriting because it is tough to write with mouse. Okay, so t equal to 10 पे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लॉक का जो वैल्यू है उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एंड देन वी आर स्टोरिंग इट इन द क्लॉक. सो t इक्वल टू 10 जो है हमारा क्लॉक का वैल्यू जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, क्योंकि पहले 0 था. एंड वंस दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, क्योंकि ये ऑलवेज ब्लॉक में है तो फिर ये ऑलवेज ब्लॉक वापस रन होगा. तो एट t इक्वल टू 10 वी हैव 1, देन अगेन ऑलवेज ब्लॉक स्टार्ट्स, एंड देन अगेन इट एनकाउंटर्स दिस हैश 10. So now at t equal to 20 we'll again execute this statement, और यहाँ पे फिर इसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा, so our 1 will become 0. Similarly we'll go with 30 and our clock will become 1.
एंड सो ऑन। और ये कब तक रन होगा? ये इनिशियल ब्लॉक में भी तो कंट्रोल t इक्वल टू 0 पे एंट्री किया था ना, एंड इट एनकाउंटर्स दिस दैट वेट फॉर 1000 टाइम यूनिट्स बिफोर फिनिशिंग द प्रोग्राम। सो एट t इक्वल टू 1000 इट टर्मिनेट्स द प्रोग्राम। इसका मतलब है कि हम लोग का क्लॉक जो है वो t इक्वल टू 1000 तक रन करते रहेगा। तो क्लॉक का हमारा आउटपुट कैसा आएगा? So this is time unit. So our clock will be first 0 for 10 time units. Then उसके बाद से 1 रहेगा 10 time units के लिए. Then again 0 रहेगा for another 10 time units. Then this will be 1 and it will go on. So this will be a periodic waveform जिसका हम लोग टाइम पीरियड कितना मिल जाएगा? We'll get the time period as 20 time units. So this is the function of using always statement. अभी आगे हम पढ़ेंगे that we can control the execution of always statement using some timing controls. But ओवरऑल यही काम है कि ऑलवेज इनिशियल ब्लॉक स्टार्ट एट इक्वल टू 0। इनिशियल ब्लॉक सिंगल टाइम एग्जीक्यूशन है। ऑलवेज ब्लॉक जो है इट गोज ऑन एग्जीक्यूटिंग टिल द दिस डॉलर फिनिश स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड। ओके, नाउ वी हैव प्रोसीजरल असाइनमेंट। तो अभी तक हम लोग क्या यूज करते थे? एज यू रिमेंबर इन डेटा फ्लो मॉडलिंग, whenever you used to assign some expression to a variable, we use the keyword assign. So we wrote assign, then a variable name equal to some expression. But in case of behavioral modeling, we can directly use the equal to sign that you are all familiar with, directly equal to, and it will store the value in the variable. So this is called the procedural assignment. Now one thing to keep in mind that ये equal to जो sign है, this is the part of behavioral modeling. इसलिए we can use equal to sign only inside initial or always block. You cannot use it outside the initial and always block because it is a part of behavioral modeling. Outside अगर if you want to use equal to outside initial or always block, we will have to write a sign. So that will become a data flow modeling problem. Okay. So the general syntax is similar to any programming language. We write the variable name equal to and then the expression that you want to assign. Now these are the few rules. These are very similar to any programming language. Like see, only a register integer real or time register can be on the left side of this equal to. We cannot use a wire because we learned in the last workshop that wire जो होता है उसमें कोई वैल्यू स्टोर करके नहीं रख सकते. It is continuously driven by some expression. And when we write this equal to sign, which means that we are storing this value in this variable. So this x or y or z, whatever we are naming the variable, that variable can be either reg type, integer, real or time. तो हम लोग का प्रोग्राम में जनरली रेज और इंटीजर यूज करते हैं, रियल टाइम का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता. नाउ ये जो हमारा लेफ्ट साइड है, देयर कैन आल्सो बी bit select like a vector or array of kind reg, integer, real and time. So suppose we have addr which is a reg type of a vector, then we can use addr0 as the left side and we can assign some value to addr0. Similarly, we can assign multi-bit information directly by specifying the vector notation as some starting limit and ending limit. And concatenation can also be done. So these are the few rules. जैसे जैसे practice करोगे, you will be more familiar with all this. Okay. So now, for example, see this x equal to 0. So always remember that we write equal to signs only inside the initial block. तो बाहर कहीं नहीं use कर देना. Always you have to write as initial or always block. तो यहाँ पे हम लोग x equal to 0 store कर रहे हैं. So 0 is stored in x, 1 is stored in y, 1 is stored in z. Here see 0 is stored in count and it is saying that integer. So okay, so count would be integer variable. ये सब variables जो है we define at the start of the module. Now see, we can also suppose reg a is a 16-bit vector of register. So we are assigning it to 16 zeros. So this is very similar to any programming language. You are directly assigning some value to a variable.
Now the difference between any normal programming language and Verilog starts from here कि हम equal to use कर रहे हैं. It can be of two types. It can be a blocking assignment or it can be a non-blocking assignment. और ये part को समझना is very important for the problems or for implementing any circuit. So first we have blocking assignment. तो blocking assignment क्या है कि it blocks the execution of the statements that follows. जैसे एग्जांपल यहाँ पे तुम जब कंट्रोल आएगा x equal to 0 पे, तो while executing x equal to 0, all these part which is following this x equal to 0, they all will be blocked. ये सब execute नहीं होगा. So first x equal to 0 execute होगा. After that y equal to 1 execute होगा. After that z equal to 1. So when you use a blocking assignment, which means a direct equal to, तो हम लोग का एक sequential execution start हो जाता है. That it will execute the first statement, semicolon के बाद वाला statement फिर उसके बाद होगा, फिर again the next statement and so on. और उसके बाद से वैसे ही है. तो यहाँ पे another interesting thing to learn is to see. now हम लोग का मानो ये program जो है it started executing. तो our initial block is here, so it starts at t equal to 0. Now t equal to 0 पे our control reaches here and it encounters a blocking assignment. So it stores 0 in x and then it moves to the next, stores 1 in y, 1 in z and so on. यहाँ पे interesting बात यह है कि we know that all these assignments are taking place sequentially, but all these assignments would take place at time t equal to 0, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कहीं भी delay introduce नहीं किए. So for our understanding, we know that all these statements are executing sequentially, but for the computer, there won't be any delay in execution of these statements. So it will just go on executing x equal to 0, y equal to 1 in sequential order, and we will finish this part all at t equal to 0. फिर यहाँ पे जब आएगा control, तो यहाँ पे it will encounter a hash 15, which means it will wait for 15 time units. So at t equal to 15, we will execute this statement. तो t equal to 15 पे यहाँ पे फिर non-blocking, यहाँ पे फिर blocking assignment मिला. So it will block this remaining part. It will execute this one first. So at t equal to 15, we are storing 1 in this address, register A का second address पे. Then again it will move to this line and it has a delay of 10. So at time equal to 25, ये वाला statement run होगा. तो यहाँ पे देखो concatenation operator use हुआ है. So it basically clubs together these three variables x, y, z and places this value into this variable. And then after time 25, यहाँ पे कोई delay नहीं है. So this statement, which is count, ये भी हमारा 25 पे ही execute हो जाएगा. But we should keep in mind कि although these two statements are executing at time t equal to 25, लेकिन इनमें एक order है. Like the first statement is executed first and then the second statement. इसको अगर हम लोग count को पहले लिखते और इसको बाद में लिखते, then it would have created the difference. पहले count execute होता है and then register B वाला execute होता है. So we'll see इससे क्या difference आ सकता है. So this is just the explanation of this, what I explained. See, there is a non-blocking assignment. So non-blocking assignments, blocking assignments जैसा है, but only one difference, that it does not block the execution of the statements that are following it. So for example, and this is the operator that we use for non-blocking, which is a less than equal to sign. यहाँ पे आप देखते हैं t equal to 0 पे यहाँ initial में entry हो गया. All this we already saw. ये पूरा जो है वो blocking assignment है. So sequentially execute हुआ है t equal to 0. We'll have all this executed. Now, when the control reaches this statement, it encounters this non-blocking. As soon as it encounters the non-blocking statement, it passes the control to the next statement also. Now here also it encounters this non-blocking. It passes the control to next statement. So now these all three statements will be executing at the same time. Now the condition to keep in mind, non-blocking में क्या होता है
कि एज सुन एज कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने को मतलब एग्जीक्यूट होने वाला है, तो दिस राइट हैंड साइड वैल्यू इज इंस्टेंटली इवेलुएटेड, इसको तुरंत इवेलुएट कर लिया जाएगा. नाउ एट t इक्वल टू 0 we'll have 1 here. at t इक्वल टू 0, क्यों t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे आ रहा है कंट्रोल, t इक्वल टू 0 पे हम लोग इसका वैल्यू भी एग्जीक्यूट करेंगे और उसको सेव कर लेंगे टेम्परली. एंड t इक्वल टू 0 पे ही हम लोग काउंट प्लस 1 जो टोटल राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और सेव कर लेंगे. एंड देन अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशंस we'll be assigning these stored values to the right to the left hand side. तो एक बार अच्छे से समझते हैं क्या है. तो सी, whenever बहुत सारा नॉन ब्लॉकिंग स्टेटमेंट्स एक के बाद एक अगर ऐसे लिखा रहता है, तो व्हाट हैपेंस इज दिस एंटायर ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम. नॉन ब्लॉकिंग एग्जीक्यूशन में द थिंग टू कीप इन माइंड इज दैट ऑलवेज द राइट हैंड साइड, this entire right hand side expression we are having here, we have this expression, here we have this expression. So the right hand side expression is at once evaluated directly at जिस टाइम पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है इसका. so at suppose t equal to t we are executing this, but just at t equal to t instant all these values will be evaluated and it will be stored in the simulator, temporarily stored. We don't need to define any variable for that. ये simulator internally करता है. जस्ट एट टी इक्वल टू टी ये सारा राइट हैंड साइड वैल्यूज को इवेलुएट करके स्टोर कर देगा. एंड देन अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस दैट वी हैव स्पेसिफाइड, ये जो स्टोर्ड वैल्यूज है उसको इस पे प्लेस करेगा. तो एट टी इक्वल टू टी सारा स्टोर हो गया. देन दिस इज डिले ऑफ 1 टाइम यूनिट. तो एक टाइम यूनिट के डिले के बाद जो स्टोर्ड वैल्यू है उसको वो इसमें रजिस्टर में प्लेस करेगा. तो दिस विल टेक प्लेस एट टी प्लस 1. Now this value is also stored temporarily. और ये कंडीशन हम लोग देखेंगे इस बारे में कि जब क्लॉक एक वेरिएबल हम लोग डिफाइन किए हो उसका जब नेगेटिव आ जाएगा, विच मीन्स जब क्लॉक हमारा 1 से 0 की तरफ ट्रांजिशन कर रहा हो, ओनली देन ये जो वैल्यू जो यहाँ पे स्टोर्ड है उसको रेज 2 पे प्लेस करेगा. एंड अगेन यहाँ पे 1 का डिले है, तो अगेन दिस विल बी एट टी प्लस 1. टी प्लस 1 पे ये जो वैल्यू है वो भी इसमें प्लेस हो जाएगा. तो इसका यूज कहाँ होता है? एज यू प्रैक्टिस एंड जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो यू विल learn the use of this non-blocking statement. Actually, what happens is that suppose in a module you have multiple initial statements, और initial statements में तुम्हारे पास अलग अलग blocks है. So you always want कि initial जो statements हो या initial जो blocks हो वो एक दूसरे से independent होने चाहिए. Now suppose you are using the same variable in two different initial blocks, और एक इनिशियल ब्लॉक में तुम ब्लॉकिंग स्टेटमेंट यूज करते हो एंड अदर इनिशियल स्टेटमेंट आल्सो ब्लॉकिंग स्टेटमेंट अगर यूज करते हो, तो देयर मे बी चांसेस कि बिफोर द एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स इन द सेकंड इनिशियल ब्लॉक, द फर्स्ट इनिशियल ब्लॉक विल चेंज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. Like suppose we want to swap two numbers. So if you are writing a equal to b in one initial block and then you are writing b equal to a in another initial block, तो t इक्वल टू 0 पे ये एग्जीक्यूट होगा. सपोज इसके पहले भी तुम कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हो सेकंड ब्लॉक में, तो a इक्वल टू b जो है, तो b का जो वैल्यू है वो a में तुरंत स्टोर हो जाएगा. नाउ आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस, व्हेन द एग्जीक्यूशन विल रीच दिस टाइम, दिस लाइन, देन द वैल्यू ऑफ a विल बी प्लेस्ड इन b, लेकिन वैल्यू ऑफ a जो है वो ऑलरेडी b से यहाँ पे असाइन हो चुका है. तो दिस स्टेटमेंट एक्चुअली मीन्स कि हम लोग b का वैल्यू b में असाइन कर रहे हैं. तो एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन a में भी b का वैल्यू रहेगा, b में भी b का वैल्यू रहेगा. तो दिस मीन्स कि हमारा जो दो इनिशियल ब्लॉक्स है वो एक दूसरे को इंटरफेयर करने लगा. तो ये सब जो सिनेरियोज है, टू स्केप फ्रॉम दिस सिनेरियोज वी यूज नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स. इसको अगर सोच लो नॉन ब्लॉकिंग कर दिए और इसको नॉन ब्लॉकिंग कर दिए, इसके ऊपर से हम नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स रखे हो, तो एज सुन एज दिस कंट्रोल रीचेज हियर, द प्रेजेंट वैल्यू, द वैल्यू ऑफ b दैट वाज एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट वो स्टोर हो जाएगा. दैट वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन आवर temporary register, you can say. So that will be stored.
एंड ये सेकंड इनिशियल भी रन होते रहेगा क्योंकि सारा नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट है। तो एग्जैक्ट एट टी जीरो पे ही जैसे ये हुआ उसी एग्जैक्ट टाइम पे ए का जो वैल्यू हो वो भी स्टोर हो जाएगा, एंड देन दिस स्टोर्ड वैल्यू विल बी प्लेस्ड इन ए, दिस स्टोर्ड वैल्यू विल बी प्लेस्ड इन बी। तो नाउ क्या हुआ कि जो बी का वैल्यू टी इक्वल टू टी पे स्टोर हो गया था दैट विल बी प्लेस्ड इन ए, एंड ए का वैल्यू जो टी इक्वल टू टी पे था दैट विल बी स्टोर्ड इन बी। तो यहाँ पे हम लोग सक्सेसफुल स्वैप कर पा रहे हैं। तो दिस इज जस्ट अ बेसिक एग्जांपल। इन रियल लाइफ सिनेरियोज नॉन ब्लॉकिंग स्टेटमेंट्स का बहुत काम आता है, जैसे कि व्हेन यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम फॉर द चिप, यू आर नॉट अलोन हु इज राइटिंग अ प्रोग्राम, बिकॉज चिप में जो होता है वहाँ पे इन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मॉड्यूल्स और इनिशियल ब्लॉक्स वगैरह सब अलग अलग आदमी लोग जो हैं अलग अलग एक ग्रुप होता है वो डिफाइन करता है सब। मान लो पांच पांच छः छः ऐसे ब्लॉक लेके डिजाइन किए। So if you are writing a blocking assignment in your module or in your initial block, and some other person is not writing, not taking it in account that you have written a blocking assignment, then जब सारे initial blocks को एक साथ compile करोगे, then this race around condition can occur. So it is always advisable कि जहाँ पे possible हो, जहाँ तक possible हो, we use non-blocking assignments. So when you practice the problems, we'll also be giving some practice problems. वहाँ पे it will be a practice for you to write a program using blocking assignments and non-blocking assignments to see what is the difference. So okay. तो अभी तक कोई डाउट है तो यू कैन आस्क और आई विल कंटिन्यू। ओके ठीक है, सो वी कंटिन्यू विद दिस टाइमिंग कंट्रोल्स। तो नाउ हम लोग अभी से पहले वी हैव सीन दिस हैश सिंबल, वी हैव आल्सो सीन एट द रेट, नेगेटिव, नेगेज, क्लॉक। तो अब उस बारे में बात करें कि वो सब जो स्टेटमेंट्स है वो क्या होते हैं। तो टाइमिंग कंट्रोल्स क्या होता है कि हम लोग का जो एग्जीक्यूशन है स्टेटमेंट्स का उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि किस टाइम पे कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। Because for complex designs for complex modules we want the complete control over the time or over the sequence in which the statements are executed. तो उसके लिए हम लोग पास टाइमिंग कंट्रोल्स होता है। so there are three type of timing controls: delay based, event based and level sensitive. so we'll be focusing on these two, delay based and event based, क्योंकि level sensitive जो होता है वो जनरली यूज नहीं होता है। so this is your delay based timing control. तो delay based का मतलब है we will be writing using a hash सिंबल, एंड इसका बस सिंपल मतलब है कि हैश के बाद से एक नंबर हम लोग डालेंगे और वो नंबर डिफाइन करेगा कि जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगना चाहिए। फॉर एग्जांपल दिस इनिशियल ब्लॉक द कंट्रोल एंटर्स एट टी इक्वल टू 0, दिस एक्स इक्वल टू 0 इज एग्जीक्यूटेड एट टी इक्वल टू 0। यहाँ पे जब कंट्रोल आता है देन इट एनकाउंटर्स दिस हैश 10, विच मीन्स कि अब इसको 10 टाइम यूनिट्स तक वेट करना पड़ेगा बिफोर एग्जीक्यूटिंग दिस स्टेटमेंट। So it will wait for 10 time units. So from time equal to 0, our time will be 10. At time 10, this will execute this line y equal to 1. Then it will move to this line. Here again it encounters hash latency. Now see, latency is a parameter. You could have also written hash 20, but this is another standard way कि कोई एक अगर constant value है उसको एक particular नाम दे दो। So this simply means hash 20. तो hash 20 मतलब 20 time units के लिए और wait करेगा। So it will be time 30, and at time 30 this line is executed. Similarly यहाँ पे again we'll wait for latency plus delta. Delta is 2, which means we have to wait another 22 units. So this line will be executed at 52 units. See, also we can use variables as a delay. So y, whatever will be the value of y at this particular moment, it will wait for that many time units before executing the statement. And we can also use this compound assignment or compound delay. तो ये थोड़ा टिपिकल चीज है, इसको अगर रीड करोगे तो पता चलेगा, बट इट इज नॉट जनरली यूज्ड। यू कैन ऑलवेज स्प्लिट इट इनटू थ्री पार्ट्स एंड देन एग्जीक्यूट आवर स्टेटमेंट। तो ये हम लोग का होता है नॉर्मल जो हम लोग डिले इंट्रोड्यूस करते हैं। देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिले विच इज कॉल्ड द इंट्रा असाइनमेंट डिलेज। तो इंट्रा असाइनमेंट मतलब है कि असाइन करने, ये वैल्यू कैलकुलेट करके एंड इसको वाई में असाइन करने के बीच का जो टाइम डिले हो। सी द डिफरेंस हियर, टी इक्वल टू 0 पे ये
statement execute हुआ, this will be at t equal to 0. Then this z equal to 0 will also be at t equal to 0. Then when control reaches here, it does not encounter any hash statement. So at t equal to 0, it will try to execute this. तो कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है? ऑलवेज द राइट हैंड साइड विल बी एग्जीक्यूटेड, उसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, विल गेट द वैल्यू एंड देन द वैल्यू विल बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल. So at t equal to 0, this value is calculated, x plus z. But once it is calculated and the control is trying to assign this value to y, it will encounter this hash 5 statement, which means that this x plus z value will be calculated at t equal to 0, but this y value will be placed at t equal to 5. तो इसका ऑल्टरनेटिव कैसे मतलब हुआ कि we are writing x equal to 0, z equal to 0. Then again we are writing temporary some variable where x plus z, and then we are introducing a 5 delay to store that value into y. So if we have this kind of assignment where we store this temporary store this value and then after some delay we want to assign it, so we can directly use this. Now comes this important part, which is event based control, timing control. तो इवेंट बेस्ड के लिए हम लोग सिंबल यहाँ पे एट द रेट यूज करते हैं. तो हम लोग का हैश जब यूज कर रहे थे विच वाज द डिले बेस्ड टाइमिंग कंट्रोल, वहां पे हम लोग सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू दे सकते थे या एक वेरिएबल दे सकते थे विच हैज अ कांस्टेंट वैल्यू, एंड वो हैश के बाद से जो वैल्यू था दैट वाज डिफाइनिंग कि कितना टाइम तक हमारे कंट्रोल को वेट करना पड़ेगा बिफोर एग्जीक्यूटिंग दैट स्टेटमेंट. बट व्हाट इफ वी वांट टू एग्जीक्यूट सम स्टेटमेंट ओनली इफ सर्टेन कंडीशन इज met, like if something happens or if we have a particular condition, then only execute the statement. For that we'll have this event based timing control. So this is the general syntax. We write it at the rate and then in the bracket we write a variable name and then this whatever assignment you want to do. So this simply means that whenever the value in this parenthesis, whatever the variable we are writing in this parenthesis, इस वेरिएबल का कभी भी वैल्यू चेंज हुआ, it can be changed from 0 to 1, 1 to 0, 0 to z, x or anything. Whenever this value changes, उस समय ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है. So if suppose clock was 0 and as soon as clock becomes 1, there is a change in value of clock, and so at that instant this q equal to d line will be executed. Similarly, we have this keyword pos edge, which means the positive edge. Like we saw in our clock example that we had a clock which was going like this. This is the general waveform of a clock. So positive edge क्या होता है? Positive edge is defined as a transition from a lower value to a higher value. So in normal sense, positive edge will means from 0 to 1. But in Verilog, as we have 4 types of values, so positive edge means so we have this kind of profile. We have 0, we have x, we have z, and then we have 1. So transition from 0 to x or z, that is also a positive edge. Transition from xz to 1, that is also a positive edge. And direct transition from 0 to 1, that is also a positive edge. So अगर इन तीनों में कोई भी एक condition होता है, then this statement will be executed. Which means if the value of clock goes from 0 to x or z, or 0 to 1, or x or z to 1, anything happens, this assignment will be executed and d will be stored in queue. Similarly, we have neg edge. Neg edge is just the reverse of pos edge. Pos edge means positive edge, neg edge means negative edge, which means we have value going from higher level to lower level. So this defines the negative edge. So this is we can also write like this. This is similar to this intrust assignment delay. So this d value will be calculated as soon as this assignment reaches here, but it will be placed on queue only when this condition is met. Now the important part is that we can use this event-based control in always statement. So we can write always at the rate, and we can combine different variables using or. You can write always at the rate reset or clock or d, which means if there is any change in the value of any of these 3 variables, either there is a change in reset, clock में कुछ change हुआ या d में कुछ change हुआ, इन तीनों variables में किसी एक में भी change हुआ या more than one में change हुआ, तो ये वाला जो always block है that will execute. Otherwise this always block will not execute.
So suppose our reset was 0 and it goes to 1, and rest clock and D are same. But as there is a change in the variable, this block will be executed. And now here if reset, it will check reset का value अगर 0 है कि 1 है, उस हिसाब से it will execute this. So I think you must be knowing about this if else statement. But हम लोग पढ़ेंगे उसको भी details में. Okay, so now we have this conditional statement. So conditional statements, most of you must have learnt about this or must be knowing it. कि C programming में या any programming में if else conditional statements होते हैं. That we have if and then a conditional part, and if the condition is true, then we have a particular statement executed, and if the condition is false, then we have some other set of instructions that are executed. So यहाँ हम लोग का Verilog में भी it is a similar kind of conditional statement. So see, you can write like this: if then one expression, and if it is true, then this statement will be executed. So this is an if without any else. Second type is you can write if the expression true, then something, and if it is not true, then you can write else, this false statement. And the third one also you must be familiar. It is if you have multi-conditional task to perform, then you can write if condition number 1, and if it is true, you execute this. Else if you have a condition 2, else if you have condition 3, and else if all these conditions are false, you can write this default statement. So this is exactly same to C programming, if else statement, and this is I think you must be knowing this. Now again, this is also behavioral statement case, which is similar to the C switch case that we use. So here also we write case, then some expression, and then we write some values. And if the expression equal to the value, then that statement is executed, and we write end case to end this switch case. So for example, here we have reg ALU control, which means we have a 2-bit control, 2-bit this variable. And see, here are some statements. So maybe that in these statements you are defining. Please mute your mic. Okay. So we have some statements here. So when executing this statement, there may be that we are placing some value in this ALU control, and then we are executing this case statement where our case will basically match the value of ALU control with these conditions. मानो तुम्हारा ALU control जो है that has the value 0 0, which means it matches this condition. So this statement will be executed, and the control will leave this case condition. If you have ALU as 0 1, this will be executed. If you have 1 0, which means a 2, this will be executed. And if it does not matches any of this, which means that your value can be either 1 1, or you have some combination of X or Z, which is not exactly matching this. So then this default statement will be executed. So this is exactly same to the same as the switch case that we use in C and C++. Now comes the looping construct in Verilog. So looping construct are 4 types: while, for, repeat, and forever. All the syntax are similar to C programming. You must be knowing about these two, while and for. And these are 2 other looping constructs that we use in Verilog. And see, this is always a recurring thing that you have seen. This is very important this time. This is very important statement. All looping construct can appear only inside initial or always block. क्यों? क्योंकि जो looping construct है, या फिर जो if else construct था, या फिर the case construct था, all these are behavioral models, right? So whenever we use a behavioral model, we need to place it inside initial or always block. उसको हम लोग without initial or always block को नहीं रख सकते. Like just in a module, we cannot just write while loop or for loop or if else statement. We need to assign initial, and then we need to create the block, and then inside the block we have to write if else and loop conditions. And loops can have delay. Delay is a general statement. You can provide delay to any statement. You could also provide delay to gate level modeling also. So delays are always applicable. Now for while loop, this is again exactly same to the C. So you have this integer count,
we write initial and we place while in under initial loop. So we are here, we are initializing this value of count as 0. So this will be initialized at t equal to 0. Count will be 0. Now here we are writing while count less than 128. This is a condition. And then inside the while loop, we are writing this body. And see, when we have multi line statements, then we use this begin and end statement. So basically क्या कर रहा है कि it checks this condition. So we have count equal to 0. So 0 is less than 128. It is correct. Then it will move into this body. It will execute this statement, $display count equal to count. So it will print on the screen count equal to 0. Then count will be incremented. So count will become 1. Then again it will check the condition and it will go on executing till this condition is correct, which means it will display up to count equal to 128. After 128, no, it will execute on up to count equal to 127. And after 127, the count will be incremented and it will become 128. Then when it will check this condition, count less than 128, so it will be false. And then it will come out of this while loop. So it is exactly same to C programming or C++ programming. It's nothing new. Similarly, for loop, you must have read about this also. So this is the general for loop syntax, where you write initialize the variable, you give a condition, and you give this update statement, and then inside this body you write whatever the statements you want to execute. It is exactly now same as this for loop you use in C programming. So these are two other looping constructs that you find in Verilog. Suppose you want to repeat a particular set of instructions for a fixed number of times, then you can directly use repeat statement, and then you need not use while and then create another variable and define a condition. If you know that you want to execute this this particular statement 128 times, you can simply write repeat 128 and this and then the body. So it will repeat this body for 128 times and then it will exit this. Forever loop executes forever, which means until this $finish task is encountered, it goes on executing. So it is similar to this always block without any condition. It goes on executing unless this $finish system task is encountered. So forever loop is also used to create clocks. Like we can write register clock is a variable. We can write initial block. We have assigned 0 value to clock. And then see here, this is the statement forever 10 clock equal to complement clock. So this is exactly the same implementation that we all saw earlier. तो यहाँ पे क्या होगा कि हर 10 टाइम यूनिट्स के बाद से क्लॉक का वैल्यू को चेंज करेगा एंड दिस विल कंटिन्यू अंटिल $finish task is encountered. So yeah, this is the basic crux of behavioral modeling. Now wait a minute. So we have time. Ujjwal, तू एक्सप्लेन कर सकता है, एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर सकता है, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो देन विल मूव विद दिस रियल लाइफ प्रॉब्लम. ठीक है. एंड फॉर द टाइम बीइंग इफ एनी वन ऑफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क. ज्यादा लोग तो है नहीं, बट यू कैन आस्क इफ यू हैव एनी डाउट. ओके उज्जवल, तू शेयर कर ले. हाँ, स्क्रीन दिख रही है? हाँ, ठीक है. So till now we have covered mostly all theory for Verilog. So now we will see some examples. This will help you to understand everything more clearly. So first example, we will see about T flip-flop. There are many types of flip-flop like D, T flip-flop, JK flip-flop, SR flip-flop. But T flip-flop is the most easy and most widely used flip-flop in digital designing. So we will start from here only. So this is a
you can say this is a representation of D flip-flop. And we have two inputs, D, which stands for data, and a clock. We are assuming that our flip-flop is a positive edge. We have two types of flip-flop, positive edge or negative edge. Now we are assuming that our flip-flop is positive edge. It has an output Q, okay? And this is a truth table for D flip-flop. So its truth table is very simple. If the input is 0, then output will be 0 at whenever the positive edge will come. If its input is 1, output will be 1 when the positive edge will come. So let's see how we can write a Verilog code for it. So first of all, in any module, you have to declare a defined time scale. Okay, the every delay which we write hashtag 5, hashtag 10, these all will have this time unit. Okay, 1 nanosecond. Okay, then we declare module and name it as TFF. We can give any name. Then we define all the port which we are using, inputs and outputs. Then we will specifically define which port is input and which port is output. So our Q is output. So we declare it as output. And in Verilog module, we usually give take output as a register because we are using behavioral modeling. Okay, and LHS terms should be of register type. And then we will declare input, our D data, reset, and clock. So one thing also, reset. What is reset? Reset will do reset. Reset will reset the D flip flop. Okay, whatever will be the input. If reset is equal to 0, then our output will be 0, no matter what is happening. So okay, here we start our code always. As Nishan told that there is a always block and an initial block. We are using always block, and at the rate inside bracket we define at what at मतलब किस वेरिएबल पे हमें अपना ऑलवेज ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है लाइक पॉजिटिव एज क्लॉक जब भी पॉजिटिव एज आएगी क्लॉक की एंड नेगेटिव एज ऑफ रीसेट जब भी हमारा रीसेट 0 हो रहा होगा तब हम लोग ऑलवेज ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे बिगिन एंड एंड दिस इज सिंटैक्स ओके बिगिन एंड जैसे सी में हम लोग ब्रेसेस यूज करते हैं वैसे यहाँ पे हम लोग बिगिन एंड एंड यूज कर रहे हैं ओके देन सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट है इफ रीसेट इक्वल टू 0 अगर रीसेट 0 है तो क्यू को 0 कर दो सिंपल एल्स अगर रीसेट 0 नहीं है तो क्यू को डी के बराबर कर दो जो इनपुट है वही आउटपुट होगा सिंपल टी फ्लिप फ्लॉप में यही होता है सो वी आर डूइंग द सेम थिंग क्यू इक्वल टू डी एंड वी आर यूजिंग नॉन ब्लॉकिंग assignment. As Nishan told, we all usually use non-blocking assignment, so it does not interrupt with the other modules. So this is a code for D flip-flop. This is the same thing which I explained. Okay, now I have defined a code for D flip-flop, but we have to give some inputs. So for that, we will write a test bench. So test benches is also a type of module. So for every module, you have to first define the time scale. Okay, you define time scale, then you will define the module name, test bench, you can give any name. Then you will define outputs and input. Outputs of test bench are always defined as wire. Inputs of test bench are always defined as register. And then we will instantiate our D flip-flop. We will call our D flip-flop. Okay, we have given UUT name. We can give any name. Then, okay, we write everything in initial or always block. Okay, and we can have as many of initial like जितने चाहे उतने हम लोग initial और always block use कर सकते हैं उसमें कोई limit नहीं है तो here I have used 3 initial block 1 2 3 okay and we will see what each of these initial block is doing. So first thing is okay, first initial block is making a clock.
You know clock is like this. सॉरी, थोड़ा ठीक है, ऐसे होती है क्लॉक, थोड़ा सिमेट्रिक ऐसा, ठीक है। तो हम लोग क्लॉक कैसे बना सकते हैं वेरीलॉग में? तो इनिशियल क्लॉक डिफाइन कर दिया, क्लॉक इनिशियली मैंने डिफाइन कर दिया, क्लॉक मेरी जीरो है, ओके जीरो है। फिर रिपीट, अभी निशात ने बताया रिपीट फॉर एवर एंड वाइल एंड फॉर लूप हम लोग यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे रिपीट यूज कर रहा हूँ। रिपीट 32, इट मीन्स वी विल रिपीट 32 टाइम्स, ओके। सो देन हैशटैग 10, 10 सेकेंड का डिले होगा, उसके बाद हमारी क्लॉक इक्वल टू नेगेटिव ऑफ क्लॉक, हमारी क्लॉक टॉगल हो जाएगी, अगर जीरो थी तो वन हो जाएगी, वन थी तो जीरो हो जाएगी। तो अभी जीरो थी, 10 सेकेंड्स बाद वन हो जाएगी, फिर 10 सेकेंड्स बाद जीरो हो जाएगी, ऐसे ऐसे करके हमारी क्लॉक चलती जाएगी। सेकेंड इनिशियल ब्लॉक रीसेट, इनिशियली रीसेट जीरो है, 100 सेकेंड तक रीसेट जीरो रहेगा, देन उसके बाद वन हो जाएगा। फिर थर्ड इनिशियल ब्लॉक में हमारा डी इनिशियली जीरो है, फिर रिपीट 16 टाइम्स, ओके 16 टाइम रिपीट्स होगा, हैशटैग 20, 20 सेकेंड्स के डिले के बाद हमारा डी टॉगल होता रहेगा, जीरो था तो वन हो जाएगा, वन था तो जीरो हो जाएगा। So these all three initial block will start executing at time t equal to 0 and will execute at parallel. So this is the explanation for first initial block. Okay, now this is the result. This is our test bench and this is our code. So what is happening? Let's see the result. So clock, as I said, clock will toggle at every 10 nanoseconds. So you can see at every 10 nanoseconds our clock is toggling forever, like for 32 times, because I have used repeat 32. You can see reset. Reset is 0 for 100 second. Reset is 0 for 100 second, and after 100 second it will become 1. So it here after 100 second it is becoming 1. And D will toggle after every 20 seconds. You can see it is toggling after every 20 seconds. Now Q is our output. Let's see what is happening. As I said, if reset is equal to 0, then our output will always be 0 no matter what is our input. So till 100 second, you can see that our output Q is 0. After 100 second, our reset will become 1. So our D flip-flop will start functioning. So after 100 seconds, this is our first positive edge of the clock. At this positive edge, you can see that D has value of 1. So our output will also take value of 1. Here the second positive edge comes. Here the value of D is 0. So our output will become 0. Okay. So like this, our D flip-flop works. Okay. So now we move to next flip-flop, which is T flip-flop. So this is a representation of T flip-flop. Same as D flip-flop, it has one input T and other input is clock and output is Q. So for T, this is the truth table, you can say. So if T is equal to 0, then our output will be same as the previous output. If T is equal to 1, then our output will become complement of the previous output. Okay? So let's see what is the Verilog code for T flip-flop. So simple, पहले टाइम स्केल डिफाइन की, फिर मॉड्यूल नाम दिया TFF, इनपुट्स एंड पोर्ट्स सारे डिफाइन कर दिए, Q, T, reset and clock. Output है Q, register type. Input is our T, reset and clock. Now we are starting in always block at the rate. Whenever there will be a positive edge, then our T flip-flop will execute. This is a positive edge T flip-flop, and negative edge reset. If reset is equal to 0, then output will be 0. So begin and end syntax. If reset equal to 0, अगर reset 0 है तो output 0 होगा no matter what is happening. Okay, else अगर reset 1 है तो, इसमें भी दो कंडीशन है, ठीक है, ये दो कंडीशन है। अगर T1 है, T1 है तो क्या हो रहा है, हमें आउटपुट को कॉम्प्लीमेंट करना है। तो if T equal to 1, Q equal to
नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट, नॉट ऑफ क्यू टॉगल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एल्स अगर टी 0 है, ओके, टी इक्वल टू 0, देन क्यू इक्वल टू क्यू, नो चेंज, simple, okay. And this way here we end our end module. This is a test bench for T flip flop. This is exactly same as D flip flop, okay. Just we have replaced T with D with T, nothing else has changed, okay. So here is the output of the T flip flop. First thing we can see that reset is 0 for 100 second, so our output will be 0 for 100 second no matter what is happening at the input. After 100 second, this is the first positive edge of a clock, and at this time the t value is 1, okay. So our output will become toggle. Earlier it was 0, now it will become 1. At the second edge of clock, our output is 0, our t is 0, okay. So our output will remain same, it is 1. At third positive edge of clock, our t is 1, so our output will become toggle. Here it is 1, here it will become 0. And like this you can see rest of the simulation. Okay, so in DigiSim you have learned how to make different types of flip-flop from different flip-flop. Like you can make T flip-flop from D flip-flop, JK flip-flop, or any other flip-flop. So here we will write a Verilog. Okay, we have write a Verilog code for D flip-flop earlier. So we can also use that code to make our T flip-flop. Okay. So here is the circuit, how to design a T flip-flop from using a T flip-flop. So just simply by adding an XOR gate, we can make our T flip-flop using D flip-flop. जो डी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट होगा उसको हम लोग एक इनपुट दे देंगे XOR में, एंड अदर इनपुट ऑफ द XOR विल बी T ओनली. So here is a Verilog code. Module define किया है, ports define किया है, output define किया है, input define किया है. You see here we don't define our output Q as register. Okay. So why? Because here we are not using behavioral modeling of Verilog. So wire type will also work. It is data flow modeling. Okay. We have defined a wire DT. This is DT. Okay. And assign. We have assigned DT equal to Q XOR of T. जो ये है. This is Q T. Q XOR T equal to DT. डिफाइन कर दिया. उसके बाद कुछ नहीं किया, DFF को कॉल कर लिया, D फ्लिप फ्लॉप को कॉल कर लिया, एंड इट्स आउटपुट इज Q, इनपुट है DT ये वाला वायर, एंड क्लॉक एंड रीसेट. बस सिंपली टी फ्लिप फ्लॉप बन गया. टी फ्लिप फ्लॉप से अगर हमारे पास टी फ्लिप फ्लॉप का पहले कोड था तो बस एक बार कॉल करना है और हमारा टी फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा. ठीक है, हम लोगों ने देख लिया टी फ्लिप फ्लॉप कैसे बनता है, डी फ्लिप फ्लॉप कैसे बनता है, जेके फ्लिप फ्लॉप भी देख लेते हैं जल्दी से. तो टेबल उसकी पहले सबसे पहले जेके फ्लिप फ्लॉप में 2 इनपुट होते हैं, जे एंड के, एंड क्लॉक तो रहती है सारे फ्लिप फ्लॉप में, और आउटपुट है क्यू, और एक आउटपुट क्यू बार रहता है, सामने रहता है क्यू एंड क्यू बार. जो क्यू होगा उसका कॉम्प्लीमेंट क्यू बार होगा. So we are assuming that this clock is 1. Okay. So if J and K both are 0, then the output will not change. It will remain same. If J is 0 and K is 1, then output will become 0. Q equal to 0. If J equal to 1, K equal to 0, then output will become 1. If J and K both are 1, then output will be the complement of the previous output. It means it will toggle. Okay. So here is a Verilog code for JK flip flop. So module name define किया JK flip flop, JK/FF. Input output सब define कर दिया ports में. फिर उसके बाद
as I said, there are two outputs, Q and Q bar. So तुम हमेशा फ्लिप फ्लॉप में सिर्फ एक ही आउटपुट पे ध्यान देते हो, क्यू, क्योंकि क्यू बार तो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, तो कुछ नहीं करना है। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे असाइन कर दिया क्यू इक्वल टू क्यू, क्यू बार इक्वल टू नॉट ऑफ क्यू। तो बस कुछ नहीं करना है इसके लिए। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने ऑलवेज शुरू किया। ये हम लोग रीसेट यूज नहीं कर रहे हैं इस वाले में, फ्लिप फ्लॉप में। सो सिर्फ पॉजिटिव एज में ये टॉगल होगा, जो भी होगा। Here we are using case statement. We can also use if else, okay, but we are using case statement. So j and k हमारे वो है, वेरिएबल है। If j and k equal to 0, j and k are 0 0, then q will be same, no change. First case. If j equal to 0, k equal to 1, output will be 0, q equal to 0. If j equal to 1, q equal to 0, then output will be 1. If j and k both are 1 1, our output will become toggle. So q equal to not of q. जो स्टेट जो यहाँ पे थे सारे केसेस, वही केसेस हम लोग ने लिख दिए सिंपल केसेस स्टेटमेंट यूज करके। फिर हम लोगों ने एंड केस और एंड मॉड्यूल यूज कर लिया, खत्म। ठीक है, इतना सिंपल होता है। ठीक है, बाकी तुम लोगों ने अगर जेके फ्लिप फ्लॉप या डी फ्लिप फ्लॉप के कोड देखे होंगे, अटैक सर्किट देखे होगा, तो बहुत सारे गेट्स यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो कितनी सिंपली हम लोग लिख सकते हैं वेरिलॉग कोड, सिंपल इफ एल्स एंड स्टेट, इफ एल्स का यूज करके, केस स्टेटमेंट का यूज करके। सो these all about the flip flop. Now, okay, you might have heard about shift registers. There are different types of shift register. So main function of shift register is to shift your data for a defined bits. Let's see if we have a left shift register. Okay, x हमारा 7 है। okay, बाइनरी फॉर्म में ऐसे होगा 0 0 1 1 1, 3 1 है यहाँ पे। अगर मैंने बोला कि x को, जो अभी हमारा यहाँ पे x है, इसको 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट कर दो, एक बिट से हम लोगों ने लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, ये लेफ्ट शिफ्ट का सिंबल है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, बस एक एक बिट खिसकती जाएगी, और जो लास्ट में बिट खाली होगी उसमें हम लोग चाहें तो अपनी तरफ से कोई इनपुट दे सकते हैं, और वी कैन जस्ट गिव एन इनपुट 0। Here we are shifting our x with 3 bits. So 3 bits शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ गया, और जो लास्ट की 3 बिट खाली हुई वहां पे 0 आ गया। Here I am shifting our x with 2 bits. So एक 1 हमारा कैंसिल हो गया, बाहर निकल गया, तो यहाँ पे 2 1 बचे, और बाकी जो बचा 0 0 पीछे से आ रहे थे। ओके, ये शिफ्ट लेफ्ट है। अगर मैं बोलूँ तुम्हें शिफ्ट राइट करने को, मान लो कि एक नंबर है 1 0 1, इसको मैंने बोला राइट शिफ्ट करो। ठीक है, 3 बिट्स हैं, राइट शिफ्ट करने के लिए 3 बिट्स ही रहेंगी फाइनल आंसर में। राइट शिफ्ट किया तो ये वाला 1 बाहर चले जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे जो प्लेस खाली है यहाँ पे हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, 0 दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं आप। ठीक है, तो ऐसे राइट शिफ्ट है, एक लेफ्ट शिफ्ट है। So there are many types of shift registers, right shift, left shift, एक होता है कोई चेंज मत करो, ठीक है, नो चेंज, और एक या फिर पैरेलल लोड, जो इनपुट देंगे वो आउटपुट आ जाएगा। So we have made a circuit universal shift register. It will have 4 different mode: no change, shift right, shift left, and parallel load. Okay, you can see here its representation. This is universal shift register. S1 and S0. S1 and S0 will define in which mode our universal shift register will work. If it is 0 0, then no change, 0 1, shift right, 1 0, shift left, 1 1, parallel load. I parameter is our input, A parameter is our output. ये सिंबल देख लो स्लैश एंड 4, इसका मतलब है 4 बाइट का है हमारा इनपुट एंड आउटपुट, 4 बिट। ठीक है, 4 बिट का है हमारा इनपुट एंड आउटपुट। ओके,
मैंने कहा कि जब भी हम लोग लेफ्ट और राइट शिफ्ट करेंगे तो एक हमारी एमएसवी में या एलएसवी में एक बिट खाली हो जाएगी, तो उसकी जगह हम लोग एक इनपुट दे सकते हैं, एमएसवी इनपुट एंड एलएसवी इनपुट। जब भी हम लोग लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ये वाला आ जाएगा लास्ट में, जब भी हम लोग राइट शिफ्ट करेंगे तो एमएसवी में ये वाली बिट आ जाएगी, ये इनपुट है। और क्लॉक और क्लियर भी है, क्लियर करने के लिए। सो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका सर्किट। ये सर्किट है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी डिजी तुम लोगों ने पढ़ा नहीं होगा शायद, लेकिन डिजिसम में पढ़ाएंगे। तो कुछ नहीं है, डरो मत, ज़्यादा बड़ा लग रहा है लेकिन यह है इजी बहुत। तो 4 बिट का हम लोग यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर बना रहे हैं, 4 बिट का। सो फॉर 4 बिट वी विल रिक्वायर 4 D flip flop 1 2 3 and 4 mux 1 2 3 4 of 4:1 type. So okay, this is our input I3 I2 I1 I0, जो ये था I पैरामीटर। दिस इज आवर आउटपुट, ठीक है, A3 A1, एंड दिस इज आवर सिलेक्ट लाइन ऑफ मक्स। इट इज गोइंग टू एवरी मक्स। यहाँ पे भी S1 है, यहाँ पे भी S0 है, यहाँ पे भी S1 है, यहाँ पे भी S0 है, यहाँ पे भी। ओके, so S1 and S0 will define in which mode our universal shift register will work. So देखो को सर्किट थोड़ा खतरनाक लग रहा होगा लेकिन है नहीं। मैं एक इसमें से एक लेता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि हमारा शिफ्ट लेफ्ट ही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो S1 will be 1 1 and S0 will be 0. So 1 0. So our this select line, our mux will select this line 2 वाली, ठीक है। अब देखते हैं इस 2 में कौन सी क्या है। इस 2 में ये रहा, इसका वायर जा रहा है यहाँ से, ये A2 है, इसमें A2 है तो यहाँ पे A2 है, ठीक है। इस वाली 2 में यहाँ देखो A1 है तो यहाँ पे A1 है, यहाँ पे जाओगे तो यहाँ A0 आ रहा है। और यहाँ पे देखो इस वाली 2 में हम लोगों ने इनपुट दिया है सीरियल इनपुट फॉर शिफ्ट लेफ्ट, ये LSV है, जो ये वाली LSV है ना, वही है ये, ठीक है। अब हमारा हम लोगों ने सेकेंड लाइन सिलेक्ट कर ली मक्स की, सारे मक्स में, तो हमारा आउटपुट भी यही होगा। इनपुट हमारा A2 है, मक्स के आउटपुट की बात कर रहा हूँ, A1 A0 एंड दिस इज LSV। अब क्या होगा, अब क्लॉक आएगी, ठीक है। मान लो पॉजिटिव एज टी फ्लिप फ्लॉप है, ये सारे पॉजिटिव एज ही हैं। तो जब भी पॉजिटिव एज आएगी अगली, तो हमारी इनपुट डी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में क्या है, इस वाले को देखो बस, ठीक है। यहाँ मक्स के इनपुट में A2 था सेकेंड लाइन में, तो आउटपुट में A2 हो गया। जब भी अगली क्लॉक आएगी पॉजिटिव, डी में क्या है, A2 है। जब भी अगली पॉजिटिव एज आएगी तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से A2 कैंसिल होके A1 हो जाएगा, यहाँ से A1 कैंसिल होके A0 हो जाएगा, और यहाँ से A0 कैंसिल होके LSV हो जाएगा, जो भी हमें इनपुट देना है लास्ट बिट में। ओके, सो यू सी A3 हमारी चली गई, हम लोगों ने अपने डेटा को, A पैरामीटर को राइट शिफ्ट कर दिया, A2 A3 था, यहाँ A2 हो गया, सब एक एक सॉरी लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। हम लोगों ने ये थर्ड केस लिया था शिफ्ट लेफ्ट, तो हम लोगों ने लेफ्ट शिफ्ट कर दिया और लास्ट बिट में हमारा LSV आ गया, जो भी हमें इनपुट देना। ऐसे ही हम लोग राइट शिफ्ट दे सकते हैं, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। अब देखो, if I say if I ask you to write a Verilog code for this circuit, it will be very big code. Okay, you have to write a code for mux 4:1. Okay, first thing, then you have to write a code for D flip flop. Okay, then you have to call a mux 4 times. You can see we have used 4 mux. Okay, then you have to call the D flip flop for 4 times. So you can see that this is a very big code, but this is for data flow modeling. If we use behavioral description for universal shift register,
तुम्हें फंक्शन पता है ना, यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर क्या कर रहा है? S1 S0 नो चेंज, S1 और S0 0 0 है तो नो चेंज, 0 1 है तो शिफ्ट राइट, 1 0 है तो शिफ्ट लेफ्ट, और 1 1 है तो पैरेलल लोड। तुम्हें बस फंक्शन पता होना चाहिए, इस सर्किट की तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सीधे हम लोग कोड लिखेंगे अब। मॉड्यूल डिफाइन की, शिफ्ट रजिस्टर नाम दिया, आउटपुट और इनपुट डिफाइन करते हैं। आउटपुट रजिस्टर है ए पैरामीटर, इनपुट है आई पैरामीटर। इनपुट और भी है हमारे S1 एंड S0 सिलेक्ट लाइन, जो सिलेक्ट करेंगे कौन से मोड में हमारा यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर वर्क करेगा। MSB इन एंड LSB इन, ठीक है, क्लॉक और क्लियर करने के लिए। सीधे ऑलवेज एट द रेट, बिहेवियरल कोडिंग है, ऑलवेज लगेगा ही। एट द रेट पॉजिटिव एज में काम करेगा या नेगेटिव एज ऑफ क्लियर, अगर क्लियर 0 है तो कुछ नहीं करेगा। इफ क्लियर इक्वल टू 0 तो आउटपुट क्या होगा हमारा? 0 0 0, सिंपल, कोई चीज है ही नहीं। एल्स, एल्स अब केस स्टेटमेंट, वी हैव 4 केसेस, ठीक है। S1 एंड S0, अगर S1 S0 0 0 है तो ए पैरामीटर को आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा, तो ए पैरामीटर इक्वल टू ए पैरामीटर। इफ S1 एंड S0 are 0 1, then a parameter, then we have a shift right, okay। शिफ्ट राइट मीन्स हमारी सारी बिट्स राइट में शिफ्ट हो जाएंगी। सो हमारे ए पैरामीटर क्या हो जाएगा? 3 से जो 3 सेकेंड एंड फर्स्ट बिट है हमारे आउटपुट की, वो इधर उधर चली जाएंगी, राइट में चली जाएंगी, ओके। और जो ए जीरो है वो हमारी कैंसिल हो जाएगी, वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्सेंटेनेट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। और एक हमारी फर्स्ट बिट हो जाएगी MSB इन। ऐसे ही अगर S1 इन S0 1 0 है तो हमारा ए पैरामीटर हो जाएगा, लेफ्ट में आ जाएंगी हमारी सारी बिट। सो जो हमारी A3 है वो हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, तो ए पैरामीटर 2 से लेकर 0 तक 3 बिट, और लास्ट बिट हो जाएगी LSB इन, हमारा जो इनपुट है। और अगर हमारा S1 एंड S0 1 1 है तो देन अवर ए पैरामीटर विल बी इक्वल टू इनपुट पैरामीटर, जो भी हम लोग पैरेलल लोड में इनपुट देंगे वो हमारा आउटपुट में आ जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट अ कोड फॉर दिस big circuit without making a circuit. You can write a code using the description about the circuit only. तुम्हें सिर्फ फंक्शन पता है सर्किट का, तुम कोड लिख सकते हो आसानी से, ओके। काउंटर, तो काउंटर जैसे नाम से पता चल रहा होगा कि काउंट करेगा, ठीक है। लेट्स से वी हैव अ 4-bit काउंटर, रिपल काउंटर। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ काउंटर, रिपल, बाइनरी, ये आगे पढ़ोगे अभी तेजी से में। तो अभी के लिए बस देखो, सिंपल, कुछ नहीं है। जब जब मैं काउंट दूंगा, मतलब जब जब काउंट आएगा तो हमारा ये आउटपुट है Q3 Q2 Q1 Q0। ये देखो, ये 0 है अभी, ये 1 है, 2 है, ऐसे ऐसे काउंट बढ़ते जाएगा टिल 15, क्योंकि 4 बिट से तुम सिर्फ 15 तक जा सकते हो। मैक्सिमम नंबर यू कैन डिनोट विद अ 4 बिट इज 15। तो ऐसे ऐसे करके हमारा काउंटर काम करता है, 0 1 2 3 ऐसे। दिस इज अ कोड फॉर अ काउंटर। वी हैव यूज्ड डी फ्लिप फ्लॉप, 4 डी फ्लिप फ्लॉप यूज किए हम लोगों ने। सो मैं इस सर्किट को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। सो हियर इट इज अवर रीसेट, अभी इसका कुछ काम नहीं है, ठीक है। एक चीज देखो तुम इस ट्रुथ टेबल में, जो हमारी Q0 है वो बार बार टॉगल हो रही है, 0 1 1 0 1 0, ठीक है। हर बार टॉगल हो रही है, 0 1 0 1, हर काउंट पे टॉगल हो रही है। और हमारी जो Q1 है वो तब टॉगल हो रही है हर 2 बार में काउंट टॉगल हो रही है, ठीक है। So you can see that whenever our Q0 is going from 1 to 0, then our Q1 is toggling. यहाँ पे 1 से 0 गया, हमारा Q1 0 से 1 हो गया। यहाँ पे 1 से 0 गया, हमारा Q1 1 से 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आते हैं Q2 में आते हैं। जब भी हमारा Q1 1 से 0 में जाएगा, 1 से 0 में गया, हमारा Q2 टॉगल हो गया,
यहाँ पे 1 से 0 में गया, हमारा Q2 टॉगल हो गया। ऐसे ही अगर हम लोग Q3 देखें, जब भी हमारा Q2 1 से 0 में जाएगा, 1 से 0 में गया, ये टॉगल हो गया। ठीक है, so you can see that there is a pattern. If last previous bit is toggling, is going from 1 to 0, then our next bit will get toggle. So हम लोग इसी चीज का यूज करके ये सर्किट क्रिएट किए हैं। डी फ्लिप फ्लॉप यूज किया हम लोगों ने, काउंट है, ये नेगेटिव एज फ्लिप फ्लॉप है। ओके, सो जब भी हमारा काउंट 1 से 0 होगा, हमारा डी फ्लिप फ्लॉप काम करेगा। और तुम ध्यान से देखो, जो डेटा इनपुट है वो क्यू बार है। ओके, ठीक। अब मान लेते हैं कि सारे पहले रीसेट हैं, सारे फ्लिप फ्लॉप रीसेट हैं, 0 0 है सब में, 0 0 0 0। ओके, अब देखो काउंट आया, ठीक है, नेगेटिव एज आई काउंट की, ये 0 है तो ये 1 होगा, क्यू बार है, ये 1 है तो ये 1 है। जैसे ही काउंट की नेगेटिव एज आई, हमारा इनपुट में 1 है तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया, ठीक है। अब अगली बार क्या होगा, तो ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा, क्यू बार। अब अगली जब भी काउंट की एज आएगी, तो हमारे ये 0 इनपुट है, डी में 0 है, तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही ये 0 हुआ, हमारा ए 0 0 हुआ, 1 से 0 हुआ, तो ये वाला फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, और इसके में इनिशियली 0 था, यहाँ क्यू बार पे 1 है, इनपुट में 1 है, तो पहले A1 0 था। अब जैसे ही A0 0 से 1 हुआ, 1 से 0 हुआ, हमारा A1 0 से 1 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके ये काउंटर काम करता है। ठीक है, सर्किट समझने नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो, मान लो ये सर्किट है और तुम्हें इसका वेरिलॉग कोड लिखना है। सो यहाँ पे देखो, मॉड्यूल डिफाइन किया, पहले टाइम स्केल डिफाइन की, मॉड्यूल डिफाइन की, इनपुट आउटपुट दे दिए, आउटपुट डिफाइन किए, इनपुट डिफाइन किए। अब देखो ये डेटा फ्लो मॉडलिंग है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे तुम, 4 डी फ्लिप फ्लॉप इनिशिएट करोगे। तुमने 4 फ्लिप फ्लॉप इनिशिएट कर दिए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मतलब नेगेटिव एज डी फ्लिप फ्लॉप, उसको नाम दे दिया। और इनपुट एंड आउटपुट, ये A0 A1 A2 A3 सब आउटपुट है, और ये काउंट हमारा वो है, इसकी क्लॉक में जो जा रहा है। ठीक है, सेकंड डी फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक में फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही क्लॉक में हमारा प्रीवियस डी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जा रहा है। तो बस वही की है, सेकंड डी फ्लिप फ्लॉप में हमारा जो क्लॉक है वो पिछले डी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, ये तुम्हारा सर्किट हो गया, तुमने डिफाइन कर दिया सारे। और यहाँ पे तुमने डी फ्लिप फ्लॉप का कोड लिख दिया। कॉम्प्लीमेंट है तो बस नेगेटिव एज होगा, कोड वो ही है पुराना वाला, कोई चेंज नहीं है। और यहाँ पे टेस्ट बेंच लिख दी कि हर 5 सेकंड्स में, 5 नैनो सेकंड्स में तुम काउंट को टॉगल करोगे। ठीक है, तो बस यहाँ पे, और इनिशियली काउंट 0 है, रीसेट 1 है, और 4 सेकंड बाद रीसेट को 0 कर दो। तो बस ये तुमने कोड लिख दिया इस सर्किट का। अब ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ तुमसे, तुम्हें पता है तुम्हें काउंटर का कोड लिखना है। ठीक है, तुम्हें पता है कि काउंटर क्या काम करता है, कुछ नहीं करता, +1 करता है बस। तो बस तुम यहाँ पे 11 लाइन में एक वेरिलॉग कोड लिख सकते हो बिहेवियरल मॉडलिंग की मदद से। टाइम स्केल डिफाइन की, मॉड्यूल डिफाइन किया, सिंपल काउंटर, आउटपुट इसका काउंट है। ठीक है, क्लॉक है, जब जब क्लॉक आएगी तब तब हमें काउंट करना है। ठीक है, और रीसेट है। ठीक है, आउटपुट को रजिस्टर टाइप डिफाइन कर दिया, 4 बिट का आउटपुट है, क्योंकि 4 बिट हम लोग काउंटर डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, काउंट हमारा आउटपुट है। इनपुट डिफाइन कर दी, क्लॉक एंड रीसेट।
अब यहाँ पे ऑलवेज एट द रेट पॉजिटिव एज काउंटर है, पॉजिटिव एज जब भी आएगी क्लॉक की, नेगेटिव एज रीसेट होगा। ठीक है, बिगिन स्टार्ट करते हैं। इफ रीसेट इक्वल टू जीरो, अगर रीसेट जीरो है तो काउंट हमारा जीरो होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एल्स एल्स काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन। यहाँ पे मुझे ऐसे लिखना चाहिए, ब्लॉकिंग स्टेट नॉन ब्लॉकिंग स्टेटमेंट यूज करना चाहिए। ठीक है, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन, कुछ नहीं किया, बस काउंट को प्लस वन कर दिया, खत्म, काउंटर का कोड हो गया। ये इसका आउटपुट है। रीसेट यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे 20 सेकेंड्स बाद वन हो गया, और ये हमारी क्लॉक है, हर 10 सेकेंड में टॉगल कर रही है। तो जब भी क्लॉक की पॉजिटिव एज आएगी, यहाँ पे पहली पॉजिटिव एज है लेकिन रीसेट जीरो है, इसलिए काउंटर नहीं बढ़ा। ये हमारी पॉजिटिव एज है, यहाँ पे रीसेट वन है और यहाँ पे हमारा काउंटर बढ़ गया। ये हमारी सेकंड है, यहाँ पे एक और बढ़ गया, ऐसे ऐसे बढ़ते गया, यहाँ तक गया 11115। उसके बाद दोबारा 00 से स्टार्ट हो गया, ऐसे ही करके चलता रहेगा। तो देख सकते हो कितना इजी हो जाता है बिहेवियरल मॉडलिंग से कोड लिखना। ठीक है, वरना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी यूजफुल तरीका है जब तुम्हारे पास सर्किट हो। तो एक तरीका ये है पूरा डिफाइन करके सारा, और एक तरीका है सिंपल लिख दो जो तुम्हें डेफिनेशन पता है। तो ठीक है निशांत, हाँ। तो तुझे कुछ करने हो? नहीं तो सही हो गया वो तो विल बी टॉकिंग अबाउट सम रियल लाइफ, कुछ अगर इम्प्लीमेंट करना हो या कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम हो तो कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो अगले वर्कशॉप में हम बात करेंगे। अगले वर्कशॉप में विल आल्सो टॉक अबाउट फ्यू अदर सर्किट्स, सिक्वेंशियल सर्किट्स, जैसे कि सीक्वेंस डिटेक्टर होता है, और नहीं तो फाइनाइट स्टेट मशीन्स के बारे में सब पढ़ेंगे। So okay, for time being, we will suggest you to, like, if you're not already installed Verilog, then you should definitely install Verilog, and